You a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में JEE Main 24 Jan 2023 शिफ्ट 2 का ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व. सो सी हाउ वुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. सो इंटीग्रेशन हमें क्या गिवन है, दैट इज यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट है, लोअर लिमिट है 3√2 डिवाइडेड बाई 4 एंड अपर लिमिट है 3√3 डिवाइडेड बाई 4. 48 divided by what? Under root 9 minus 4x square, right? 9 minus 4x square. So the formula that we will use here is integration dx by x root under a square minus x square, that is what? Sine inverse x by a plus c, right? This formula we will use here. Okay, so what is this, what we can write this as? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 3√2 डिवाइडेड बाई 4 एंड ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4, 3√3 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज व्हाट 48 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस व्हाट 2x द होल स्क्वायर dx. now I will use the formula here. so मैं यहाँ पे 48 को आउटसाइड कर लेता हूँ, राइट? एंड व्हाट इज दैट? साइन इनवर्स. यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x क्या है यहाँ पे? 2x/3 हो जाएगा, 2x/3, राइट? 2x/3 एंड होल डिवाइडेड बाय ऑल्सो व्हाट? x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 2 है, सो दैट आई विल डिवाइड हियर. एंड लिमिट क्या है हमारा? लिमिट है 3√2, लोअर लिमिट है हमारा 3√2 डिवाइडेड बाई 4 टू 3√3 डिवाइडेड बाई 4. ओके, 2 से मैं ये 48 को कैंसिल कर देता हूँ, सो दिस इज व्हाट 24. so I write this here 24. now I will substitute here the upper limit, that is sin inverse. यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin inverse 2/3 x की वैल्यू में अपर लिमिट में 3√3 डिवाइडेड बाई 4 ये पुट कर दिया मैंने. फिर माइनस व्हाट? sin inverse I will substitute here the lower limit. so 2/3 into what? here x की वैल्यू क्या है? 3√2 डिवाइडेड बाई 4, right? 4. okay, now simplify this. so I can cancel this, right? 2 times 3 से 3 भी ये कैंसिल हो गया एंड √2 से 2 कैंसिल हुआ, सो √2. ओके, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, राइट? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल होगा 2. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज 24 एंड दिस इज व्हाट? साइन इनवर्स. वी आर लेफ्ट विथ साइन इनवर्स √3/2. okay, and minus what? sin inverse 1/√2, sin inverse 1/√2. okay, so what is the value of sin inverse √3/2? that is pi/3. so I write this here 24 और ये क्या हो गया हमारा? pi/3 and sin inverse 1/√2, that I can write minus pi/4, right? minus pi/4. okay, so this is 24. LCM, take the LCM. so 12 here, this is what? 4 pi minus what? 3 pi. okay, so this is cancel out, so this is 2 times, right? 2 into 4 pi minus 3 pi, that is pi, right? so 2 pi is the correct answer, right? so if you see the option, the correct option is option 4, right? 2 pi. hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. please consider subscribing my channel. thank you for watching. Bye bye, take care.